Okay, Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. So let's get started with IGCSE Physics, May June 2025, Paper 6, Variant 1. This is an alternative practical paper. This is a 1 hour paper. Let's get started with it. Very easy paper. Let's just dive deep into it. So let me zoom in a bit here. Hanji, perfect. A student determines the density of a ball. ठीक है हमने density of a ball determine करनी है. He places the ball between two wooden blocks as seen from above in figure 1.1. He takes two measurements D1 and D2. भाई अब D1 और D2 दो measurements ले रहे हो. Okay. On figure 1.1. अच्छा जी on figure 1.1 measure the lengths D1 and D2. बेटा आपने क्या करना है? What do you have to do? You have to take your ruler and measure these lengths. Just take a ruler, measure D2 and measure D1. Simple, nothing complicated. I have already measured D1 and D2. D1 की value was coming out to be 2.7 centimeter. D2 की value was coming out to be 2.5 centimeters. Centimeters are already written, so let's avoid writing it here. Okay, let's move ahead. Using your measurements, calculate the diameter of the ball. Show your working. Beta, how can we calculate the diameter of the ball? By taking the average of these D's. If you take the average of this D1 plus D2 divided by 2, you can calculate the diameter of the ball. D1 is 2.7, D2 is 2.5, divide by 2. आपका average diameter या diameter आ गया, that is 2.6 centimeter. Simple. Explain why this method is used to measure the diameter of the ball. Okay, why is this method used to measure the diameter of the ball? So there are many factors at play here. Beta, if you directly measure the diameter of the ball, if you take a ruler, directly measure the diameter of the ball, it's very difficult to find the center of the ball. बेटा अगर आप डायरेक्टली रूलर से डायमीटर मेजर करने आ जाओ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द सेंटर ऑफ द बॉल वेयर द सेंटर ऑफ द बॉल इज एंड if you directly measure the diameter using a ruler, there are higher chances of parallax error. If you directly measure the diameter from the ruler, there are higher chances of parallax error. So you can write these two errors here. You can say it is hard to locate. It is hard to locate the center of the ball. It is hard to locate the center of the ball. It is hard to locate the center of the ball to find diameter. सेकेंड आप क्या कह दोगे यहाँ पे? व्हाट विल बी योर सेकेंड प्रॉब्लम हियर? 2 मार्क्स का सवाल है तो यू विल स्टेट टू प्रॉब्लम्स. ठीक है. इफ यहाँ पे लिख रहे थे इफ अ रूलर इज directly used for measuring the diameter. If a ruler is used to measure diameter directly, it might result in parallax error. Simple. अब आगे बढ़ते. Calculate the volume of the ball using this equation. You have to calculate the volume of the ball using this equation. How will you do that? Volume is equals to 0.52 d cube. D की वैल्यू क्या थी बेटा? 2.6 का क्यूब. Can you calculate this answer? Let's calculate this answer. 2.6 का cube into 0.52. Now, if you put this in the calculator, you will get the answer like this: 9.13952 cm cube. Because your diameter was in centimeter, तो आपका volume भी cm cube में आएगा. Now you cannot write all this
एज योर आंसर। बेटा इतने ज़्यादा फिगर्स आप आंसर में नहीं लिख सकते हो। देयर इज अ जर्नल रूल। देयर इज अ जर्नल रूल। द सिग्निफिकेंट फिगर्स, द सिग्निफिकेंट figures in the calculated value, the significant figure in the calculated values are same or one more compared to the measured value. Let me explain to you what does this key point means. Can you realize your diameter was still two significant figures? बेटा आपका diameter दो significant figures पे था। तो आपका वॉल्यूम, योर वॉल्यूम कैन आइदर बी टिल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजर्ड वैल्यू में होंगे उससे एक ज्यादा या उसके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेटेड वैल्यू में होंगे। If you realize volume is a calculated value, it depends on the measured value of diameter. So the number of significant figures in volume can be 2 or 3. I am taking two significant figures just to keep my calculation simple. 9.1 cm cube is your answer. ठीक है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी मेजर्ड वैल्यूज में होंगे, यहाँ पे डायमीटर में टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वॉल्यूम में उतने ही या उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दिस कम्स आउट टू बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। The student measures the mass of a dish. ये आ गया mass of the dish. He places the ball in the dish and measures the combined mass of the dish and the ball. Figure 1.2 shows the dish and the ball on a balance. Okay. Record the reading shown on the balance. Okay, we have to record this reading shown on the balance. 114.1 grams. Okay. Calculate the mass of the ball. How will you calculate the mass of the ball? बेटा ये जो आपकी रीडिंग आई है 114.1 grams, this is of the ball and the dish. ये बॉल और डिश की कंबाइंड रीडिंग है। इफ यू सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ द डिश यू विल गेट द मास ऑफ द बॉल। सो यू टेक द कंबाइंड मास minus the mass of the dish is equals to the mass of the ball. Combined mass क्या है? 114.1. The mass of the dish was 102.5. What does the mass of the ball comes out to be? इसको देख लेते हैं ज़रा। Mass of the ball comes out to be 11.6 grams. Simple. Let's write it here. आगे बढ़ते। Calculate the density of the ball. Give your answer to a suitable number of significant figures for this experiment. Include the units. Okay. वो mass क्या था? 11.6. What was your volume? 9.1. Okay. So now you already know कि density कितने significant figures पे दोगे। Now you already know कि density कितने significant figures पे दोगे। Can you realize the calculated value of volume is still 2SF? तो आपने density की value either 2SF और 3SF पे देनी है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। Can you calculate the density here? 11.6 divided by 9.1. The density comes out to be 1.274. Round it off till two significant figures, 1.3 grams per cm cube. Sir, how did you got these units of grams per cm cube? Because the mass is in grams, volume is in centimeter cube. These are your units of density, gram per cm cube. ठीक है। और वॉल्यूम के सिग्निफिकेंट फिगर सर किस तरह पता चले? क्योंकि कैन यू रियलाइज the significant figures. Sorry, how did you know the significant figures of the density? Because can you realize the significant figures of the volume are 2? Hence, the significant figures of density can be 2 or 3. I keep my answer still 2 significant figures to simplify my working. 1.3 comes out to be your answer. Let's further move ahead.
A student investigates the cooling of hot water in a beaker. Okay, so we are investigating the cooling of hot water in a beaker. The apparatus is shown in figure 2.1. Okay, so this is apparatus that is shown. The student uses a thermometer to measure room temperature QR. The room temperature is 22 degrees centigrade. On figure 2.2, show clearly the reading QR. Okay, so you have to clearly show the room temperature, that is 22 degrees centigrade. This is your 22 degrees centigrade. Perfect. आगे बढ़ते हैं. The student pours 100 cm cube of hot water into an empty beaker. She records the temperature theta of the hot water in the 100 cm cube row of 2.1 as shown. अच्छा जी, ये 100 cm cube of hot water है, इसका temperature क्या है? 87 degree centigrade. So the column headings are missing. Let's input that. The volume is in cm cube, the temperature is in degree centigrade. Okay, you had to complete the column headings, तो इसका एक मार्क आपको already मिल गया. Okay. So if I show you practically what is the examiner telling us, the examiner is practically telling us that we have filled the beaker with 100 cm cube of hot water like this. 100 cm cube of hot water. चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ. Without delay, she pours 20 cm cube of cold water into the beaker. She stirs the water and measures the temperature of the hot and the cold water. अच्छा जी ठीक है. फिर आप क्या कर रहे हो? You are pouring 20 cm cube of cold water in it. फिर आप क्या कर रहे हो बेटा? 20 cm cube of cold water यहाँ पे pour in कर रहे हो. Then you are stirring the water and measuring the temperature of the hot and cold water. She repeats the procedure until a total of 100 cm cube of cold water is added to the beaker. ठीक है, आप procedure repeat करते जा रहे हो 100 until 100 cm cube of cold water is added to the beaker. Here यहाँ पे ये जो 200 cm cube of water दिख रहा है, इसमें से 100 cm cube is hot and 100 cm cube is cold. Okay, let's move ahead. All the readings are shown in table 2.1, where V is the total volume of the water in the beaker and theta is your temperature. ठीक हो गया, सही है. Plot a graph of temperature on the y-axis against volume on the x-axis. Okay. You do not need to start your axis from the origin. अच्छा जी, हमने origin से axis start नहीं करना. तो first of all तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से y-axis और x-axis को लेबल कर लेते हैं. This is your y-axis. Your y-axis is in theta slash degree centigrade. And your x-axis is volume slash centimeter cube. अच्छा, now थोड़ा सा रियलाइज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द वाई एक्सिस. थीटा को कंसिडर करते हैं. कैन यू रियलाइज द मैक्सिमम वैल्यू of theta is 87. The minimum value of theta is 49. Yes, sir. How many large boxes do we have on the y axis? बेटा कितने large boxes हैं y axis पे? By large boxes, what do you mean, sir? By large boxes, I mean bunch of 10 small boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is one large box. One large box is equal to 10 small boxes. ठीक है, तो ऐसे कितने large boxes हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have 6 large boxes on the y-axis. Let's write that down. 6 large boxes. Okay. Now, how will you calculate the scale on the y-axis? बेटा y-axis पे scale किस तरह calculate करोगे? Very easy. Maximum value minus the minimum value divided by number of large boxes. भाई maximum value क्या है आपकी? 87. Minimum value क्या है? 49. Number of large boxes क्या है बेटा? 6. What does this come out to be? 87 minus 49 divided by 6.
This comes out to be 6.33. This means, इसका मतलब ये है कि each large box on the y-axis should represent 6.33 units. But there is a problem. Always remember whenever you are choosing a scale, जब भी आप स्केल चूज कर रहे होते हो, your scale should be in the multiples of 1, 2, 5 और 10. बेटा जब भी आप स्केल चूज कर रहे होते हो, आपका स्केल 1, 2, 5 या फिर 10 के मल्टीपल्स में होना चाहिए. Sir, what do you mean by that? Although I have explained this a lot in my ATP की playlist, but let me do it again. Okay, what do I mean by this? By this I mean, oh, by this I mean that your scale can either be 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are 1 के multiples या फिर आप 2 के multiples ले सकते हो. 2 के increments ले सकते हो. This is 2, this is 4, this is 6, 7, 4, 6, 8, 10 या इस तरह कर सकते हो. या you can take 5 के multiples. What will we have if we have 5 के multiples? 5, 10, 15, 20, 25. Or you can have 10 के multiples like this: 10, 20, 30, 40, 50. ठीक है, तो आप 1, 2, 5 या 10 के मल्टीपल्स रख सकते हो. यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा था, अनफॉर्चुनेटली दैट वाज कमिंग आउट टू बी 6.63. तो 6.63 के मल्टीपल्स में तो स्केल नहीं प्लॉट कर सकते. व्हाट वी कैन इंस्टेड डू इज वी कैन राउंड अप दिस वैल्यू. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू राउंड अप योर स्केल की वैल्यूज. बेटा अगर 6.33 आ रहा है तो आप उसको 5 नहीं करना. यू ऑलवेज राउंड अप योर स्केल की वैल्यूज. अगर 6.33 आ रहा है तो आप उसको राउंड अप करना, कभी भी राउंड डाउन नहीं करना. इसको 5 नहीं करना, इसको हमेशा 10 कर देना. ठीक है, हमेशा जब भी आपकी स्केल में कोई ऑड नंबर्स आ रहे होते हैं तो ऑलवेज यू राउंड अप द वैल्यूज. ओके, now what was your minimum value? 49. So let's start with 40. Let's say this is 40, this is 50, this is 60, and let's say this is 70, let's say this is 80, let's say this is 90, this is 100. Okay. Now let's look at the y-axis. How many large boxes do you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 large boxes हैं. ठीक हो गया. Your maximum value is 200. Your minimum value is 100. Number of boxes is 6. Can you calculate the x की scale? कैसे निकालोगे? Maximum minus minimum divided by the number of boxes. Maximum क्या है भाई? 200. Minimum क्या है? 100 divided by the number of boxes. That is 6. निकालो भाई क्या आंसर आता है. This comes out to be 16.667. Now, as I have told you multiple times that you never round down. बेटा ये 16.6 आया है ना, तो इसको 10 नहीं करना. You can say this can be taken as 20. Yeah. You can plot a scale in the multiples of 20 as well. 20 के multiples में भी scale plot कर सकते हो. So let's say this is your 100. Let's say this is your 120. Let's say this is your 140. Let's say this is your 160. Let's say this is your 180. Let's say this is your 200. Let's say this is your 220. ठीक है. बेटा स्केल बनाते वक्त आपने क्या बातें याद रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज. यू विल काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस. देन यू विल कैलकुलेट द स्केल वॉट एवर इज कमिंग आउट टू बी. जैसे वाई एक्सेस पे 6.33 आ रहा था. 6.33 का स्केल तो नहीं प्लॉट कर सकते सर.
वी ऑलवेज प्लॉट स्केल्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 1 2 5 एंड 10। तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 10 कर दिया। Similarly, for x-axis, you take the minimum value, maximum value, calculate the difference divided by the number of boxes. Your scale was coming out to be 16.667. But 16.667 cannot be plotted. So we always round up. हमेशा round up करते हो scale को. This comes out to be 20. 20 is plottable. 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. ठीक है. Now let's start plotting the values. Points plot करना शुरू करते हैं. On the x-axis, if you have 100 की वैल्यू, अगर आपकी x axis पे 100 की वैल्यू, y axis पे you will have a value of 87. Let's plot this point. 100 and 87. 87 होगी. Let's choose a different color, a color that is never used before for highlighting. ये हो जाएगी आपकी 87. This is your first point. First point आ गया. ठीक है. उसके बाद what will we do? On the x-axis we have 120, y-axis पे we have 73. तो ये भी प्लॉट कर दो 120 and 73 is here. This is your next point. Perfect. अच्छा जी, फिर you have 140 and 65. अच्छा जी 140 आ गया. 65 will be this. Plotted like this. ठीक हो गया. Then on 160 आपके पास क्या है? 160 पे आपके पास 59 है. तो 160 पे you have 59 like this. Simple. Then 180 पे आपके पास क्या है भाई? 180 पे you have 54. 180 पे you have 54. यहाँ तक. Okay, what else? Then you have 200 पे 49. 200 पे आपके पास यहाँ पे 49 आ गया. Here is your last point. अब आपने क्या बनाना था? Once you have plotted the points, what do you have to draw? लिखा हुआ कहाँ है? You have to draw the best fit curve. Okay, so before we move on to the graph, let's have a short lesson on the best fit line and the best fit curve. So, what is a best fit line and a best fit curve? Basically, a best fit line or a best fit curve is a line or a curve that balances out all the points. बेटा best fit line या best fit curve क्या होता है? That balances out all the points. Sir, what do you mean by balancing out all the points? What do you mean by balancing out all the points? Balancing का मतलब ये होता है कि a best fit line is such a line that has same number of points above and below. बेस्ट फिट लाइन इस तरह की लाइन है जिसके ऊपर सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो है. सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लेट्स से दिस इज अ बेस्ट फिट लाइन. इट विल हैव 2 points above, 2 points below. बेस्ट फिट लाइन उस तरह की लाइन होती है जिसके अबव एंड बिलो सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स है. अगर अबव 2 points है तो बिलो भी 2 points होंगे. सो हेयर आई हैव ड्रॉन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस्ट फिट लाइन. हेयर कैन यू सी you have 2 points passing through the best fit line, 2 points above the best fit line, 2 points below the best fit line. Same for the best fit curve. The number of points above the best fit curve should be equal to the number of points below the best fit curve. If you have 2 points above the best fit curve, there will be 2 points below the best fit curve. 2 points are passing through the curve. Simple. अब आ जाओ best fit line पे. There are 6 scenarios of best fit line that you have to study. These are the 6 scenarios that have come in the last 20 years. बेटा last 20 years of IGCSE and O levels में ये 6 scenarios आए हैं तो सुन लो for the best fit line. अगर एग्जामिनर ने आपको 6 points दिए हैं and all 6 of them are aligning in such a way कि वो एक लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे. बेटा एग्जामिनर ने अगर आपको 6 points दिए हैं और 6 के 6 points इस तरह से अलाइन हो रहे हैं कि दे कैन बी कनेक्टेड विद अ सिंगल लाइन,
then you connect them with a single line. This is known as best fit line. सिंपल. अच्छा जी. अब एग्जामिनर ने आपको अगर 6 पॉइंट्स दिए हैं, ओनली 2 आर फॉलोइंग ऑन अ लाइन, व्हाट विल यू डू? यू कनेक्ट द टू विद द लाइन. 2 पॉइंट्स अबव द लाइन, 2 पॉइंट्स बिलो द लाइन. अब लेट से एग्जामिनर ने आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो लाइन पे लाई कर रहा है. सो 3 पॉइंट्स अबव द लाइन, 3 पॉइंट्स बिलो द लाइन. लेट से एग्जामिनर ने आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइनिंग इन सच अ वे दैट यू कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू देम. तो एक लाइन कनेक्ट कर दो सारे पॉइंट्स के थ्रू. अब लेट से एग्जामिनर ने आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, ओनली वन इज पैनिंग आउट टू बी ऑन द लाइन, 2 अबव 2 बिलो. तो आप क्या करोगे? एक पॉइंट के थ्रू लाइन बना दो, 2 अबव 2 बिलो. अब आ जाओ बेस्ट फिट कर्व पे. Same scenarios. If in a best fit curve you have 6 points that are connecting together with a curve, अगर 6 पॉइंट्स इस तरह से हैं कि वो एक सिंगल कर्व से कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट कर दो. Connect the 6 points. However, if you have 6 points in such a way that only two curve are lining on the curve, तो आप 2 पॉइंट्स above रख दो, 2 पॉइंट्स below रख दो. This is your best fit curve. However, if you have 6 points and 6 पॉइंट्स में से कोई भी कर्व पे लाई नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? 3 पॉइंट्स को अबव द कर्व, 3 पॉइंट्स को बिलो द कर्व. दिस इज योर बेस्ट फिट कर्व. नाउ लेट्स से यू हैव अ कर्व जिसमें 5 के 5 पॉइंट्स कर्व पे लाई करने, कनेक्ट दो 5 पॉइंट्स विद द कर्व. Let's say you have a curve जिसमें only 1 point is on the curve, 2 points above the curve, 2 points below the curve. This is also your best fit curve. Now let's move on to our past paper. Let's change the background. Okay. So here if you see जो ग्राफ हमने बनाया है, can you realize we can connect all these points with a single curve? I think we can connect all these points with a single curve like this. This is your best fit curve. Simple. If you can if you can connect all the points with a curve, that could be your best fit curve as well. Simple. Nothing complicated here. Easy peasy. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. In this experiment, okay, let's zoom out a bit. In this experiment, the student aims to investigate the effect on the temperature of hot water as cold water is added. Perfect. Complete the sentence to explain why it is important to add the cold water without any delay. बेटा हमने cold water without any delay क्यों डालना है? At every stage. The cold water is added without delay. Why? To avoid heat losses to the surrounding या to minimize heat losses to the surrounding. यहाँ पे आप लिख सकते हो so that the temperature change so that the temperature change only occurs so that the temperature change is due to the temperature change is due to the cold water rather than heat loss to the surrounding rather than heat lost to the surroundings. Okay, let's further move ahead. क्या लिखा हुआ है? Complete the sentence to explain the reason for stirring the water at each stage. Why are you stirring the water at each stage? The student stirs the water before recording the temperature. Why is that the case? बेटा वाटर को स्टर क्यों करते हो? To ensure even temperature throughout the liquid. यहाँ पे आप लिख दोगे to ensure even temperature throughout the liquid. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. क्या लिखा हुआ है आगे? अच्छा जी. Suggest two ways to minimize the heat losses of thermal energy from the beaker during the experiment. भाई heat losses को किस तरह minimize करें? Use some form of insulation. Use some form of insulation around the beaker. Around the beaker. What else can you use? Use a lid
on the top of the beaker. Simple. Nothing complicated here. Okay, आगे बढ़ते हैं. Name the apparatus that the student uses to measure the volume of water. कौन सा apparatus use कर रहा है student to measure the volume of water? Measuring cylinder. आगे पढ़ते हैं बेटा. Let's move ahead. Skip this page. अच्छा जी यहाँ पे आ जाओ. A student investigates reflections in a plane mirror. A rate ray sheet is shown in figure 3.1. अच्छा जी ये rate ray sheet है shown in figure 3.1. ठीक है. Draw a normal to the line MR that passes through the center of MR. Label the line NL. अच्छा जी हमने एक नॉर्मल बनाना है at the center point of MR. This becomes your normal. Obviously you will draw it with a scale. आपने नॉर्मल बनाना है with a scale. I am just drawing it as a rough hand sketch. Label the point at which NL crosses MR with the letter B. अच्छा जी जहाँ पे NL MR को कट कर रहा है that is your letter B. Okay. What else? Draw a 10 centimeter long. Draw a line 10 centimeter long from B at an angle of incidence 40 degree to the normal below MR. ठीक है below MR बनानी है हमने. And to the left of the normal label the end of this line A. अच्छा basically हमने करना क्या है? You will take a protractor. Let's take a green color protractor. You will place the protractor like this. और protractor पे जहाँ पे 40 डिग्री आ रहा है you will draw a 10 centimeter there. ठीक है तो let's draw it. Let's draw that line. ठीक है protractor यूज करके 10 centimeter long line बना लेते हैं at an angle of 40 degree. Let's do that. तो maybe something along these lines. और इस लाइन के एंड को क्या कहना है हमने ए. दिस इज योर 40 डिग्री एंगल. परफेक्ट. अच्छा जी और क्या करना है. द स्टूडेंट्स प्लेस द रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ द मिरर वर्टिकल टू एम आर. ठीक है. ही प्लेसेस टू पिन्स P1 and P2 ऑन द लाइन ए बी. ठीक है. Mark the position P1 and P2 with crosses X on AB a suitable distance apart. तो जब भी हम पिन्स प्लेस कर रहे होते हैं वी मेक श्योर द पिन्स आर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर अपार्ट. बेटा जो पिन्स का डिस्टेंस होता है आपस में उसको हम कोशिश करते हैं 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखें. तो लेट्स से अगर मैं पिन्स का डिस्टेंस आपस में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ तो लेट्स से दिस इज योर पिन 1 और यहाँ पे कहीं आ गई पिन 2. आई हैव मेड श्योर कि दोनों पिन्स का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर. ओके. The student views the images of the pin 1 and 2 from the direction indicated by the eye in figure 3.1. He places two pins P3 and P4 so that P3 and P4 and the images of P2 and P1 all appear exactly one behind the other. Okay, the positions of P3 and P4 are shown. अच्छा जी position of P3 और P4 यहाँ पे shown है. ठीक है. ओके. Draw a line through the positions of P3 and P4. Continue the line until it meets MR. अच्छा जी P3 और P4 के थ्रू एक लाइन बनानी है. Let's take the green color. Yeah, so this is your line. P3 and P4 connect हो गए यहाँ पे and we have extended it up till the MR. Okay. आगे क्या लिखा हुआ है. Measure the acute angle between this line and the horizontal line MR. An acute angle is less than 90 degree. अच्छा जी आपने एंगल मेजर करना है बिटवीन दिस लाइन एंड एम आर. अच्छा तो यू हैव टू मेजर द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एम आर. बेसिकली आपने ये एंगल मेजर करना है. सो हाउ विल वी मेजर दिस एंगल सर. वेरी इजी. टेक अ प्रोट्रैक्टर, place in the middle. You can easily measure this angle phi. I have already measured this angle alpha कह लो phi कह लो. This comes out to be 50 degrees. So let's write it. This is 50 degrees. Simple. Okay.
The student turns the mirror 180 degrees. ठीक है. He draw a new incident ray at an angle of incidence 50 degree to the normal above MR and to the left of the normal. So what is happening? What is happening? बेटा स्टूडेंट अब यहां पे एक लाइन बना रहा है at an angle of 50 degrees. Okay. He labels the end of this line C. This line is not shown on figure 3.1. You may draw this line on figure 3.1. अच्छा जी ये line को हमने C label कर दिया. This line is what we have drawn. ठीक है. He places two pins on the line CB and views the images of the two pins from near the top of the right hand corner of the trace sheet. तो बेसिकली क्या हो रहा है? आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे दो पिन्स प्लेस कर रहा है. आई एम जस्ट मार्किंग सम इमेजिनरी पिन्स. आपका स्टूडेंट यहाँ पे दो पिन्स प्लेस कर रहा है एंड ही इज व्यूइंग द पिन्स फ्रॉम हियर. नाउ हिज आई इज हियर. ठीक है. फिर क्या हो रहा है? On figure 3.1, draw a reflected ray 10 centimeter long from B with an angle of reflection B equal to the angle of incidence. Label the end of line D. Basically simple है. If your angle of reflection is 50 degree, sorry, if your angle of incidence is 50 degree, आपका angle of reflection भी क्या हो जाएगा? Yes. What will your angle of reflection be? Have we studied law of reflection? If your angle of incidence is 50 degree, your angle of incidence is 50 degree, आपका angle of reflection will also be 50 degree. This is known as your beta. Oh, why is one not doing weird things? This angle of reflection will be beta. This is your line D. तो हमने क्या किया बेटा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 50 डिग्री पे रे आ रही थी. दैट दिस रे गेट्स हिट बाय द मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक. वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा. दिस इज नोन एज योर बीटा. परफेक्ट. अच्छा जी, अब क्या पूछा जा रहा है? सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा आर इक्वल टू ईच अदर. अल्फा भी आपका क्या था? 50 डिग्री. बीटा भी 50 डिग्री है. 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे. नाउ व्हाट इज योर जस्टिफिकेशन फॉर दैट? Why are alpha and beta equal to each other? Because can you realize both of them are almost equal to each other? The results are within the limits of experimental accuracy. यहाँ पे आप लिख सकते हो both of them are equal to each other since the results of alpha and beta are within the limits of experimental accuracy, yeah, you can say within the limits of experimental error, whatever you want to say. बेटा सिंस बोथ वैल्यूज सेम हैं, यू विल जस्ट से कि भाई आपके जो रिजल्ट्स हैं अल्फा एंड बीटा आर विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर. सिंपल. इस तरह लिख दो. सजेस्ट टू टेक्निक्स दैट यू यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट रे ट्रेस. अच्छा जी, इस एक्सपेरिमेंट को और एक्यूरेट किस तरह बनाया जा सकता है? यू कैन यूज थिन शार्प पेंसिल्स. यू कैन यूज शार्प पेंसिल्स टू ड्रॉ थिन लाइंस. बेटा यहाँ पे इन तरह के रे वाले एक्सपेरिमेंट में आप हमेशा थिन लाइंस चाह रहे होते हो. वाई? क्योंकि अगर थिन लाइंस होंगी तो आप एंगल्स को एक्यूरेटली मेजर कर लोगे. What is another precaution that we can take here? You can say view the pins from the base for better alignment. बेटा हमेशा पिन्स को बेस से देखोगे तो यू विल गेट अ बेटर अलाइनमेंट. सिंपल एज दैट.
Let's move on to question 4. अच्छा जी, लेट्स रीड आउट क्वेश्चन 4। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? A student investigates the relationship between the diameter and the resistance of wires. The following apparatus is available: wire with different diameters, instrument for measuring the diameter of a wire. Which instrument will be used to measure the diameter of a wire? Micrometer, screw gauge, ठीक है. Meter rule is given, ammeter is given, voltmeter is given, power supply is given. Okay. Other apparatus normally found in a school laboratory is also available. Perfect. Plan an experiment to investigate how the diameter of wire affects its resistance. बेटा हमने एक experiment perform करना है to show how the diameter of wire affects the resistance. Resistance is given by this equation where V is the potential difference, I is the current. You do not need to write about safety precautions. ठीक है. Draw a circuit diagram to show the circuit that you will use. बेटा हम circuit किस तरह का use करेंगे? First of all, you will have a power supply like this. Okay. Power supply के बाद you will have an ammeter here to measure the current. Then हम एक वायर लगा देते हैं. Let's say diameter D का वायर लगा दिया यहाँ पे. Here is the wire of diameter D. इस वायर से पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया like this. And let's complete the circuit with a switch at the end. एक स्विच भी लगा दो, ठीक है, just to be over efficient in the exam. This is your switch S, this is your DC supply. Ammeter will measure the current, voltmeter will measure the voltage, resistance is equals to V. I से resistance निकाल लेना. Diameter of the wire कैसे निकालोगे? Using a micrometer, screw gauge और vernier caliper, whatever you wish. ठीक है, ये डायग्राम हमने बना दी. Explain briefly how will you do the experiment. चलो explain briefly भी कर देते हैं. How will you do the experiment? First of all, what will you do? You will say measure the diameter of the wire using a micrometer screw gauge. And what else? What else will you say? Measure the what? Measure the voltage using the ammeter, है ना? Using the measure the voltage V using the voltmeter and current I using the ammeter. What will be your last statement here? बेटा यहाँ पे और क्या लिखोगे आप? What will you further write here? Apply the formula. R is equals to V over I to calculate resistance. Apply the formula. R is equals to V over I to calculate resistance. R. What will be your last key point here? Repeat the experiment for different diameters. Repeat the experiment for at least 5 different diameters of the wire. बेटा आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है फॉर एटलीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द वायर. ओके, ये आपने एक्सपेरिमेंट को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया. स्टेट वन वेरिएबल टू कीप कांस्टेंट. कौन कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखोगे? टेम्परेचर.
What else will you keep constant? Length will also be kept constant. Material of the wire should also be kept constant. ये सारी चीजें constant रहनी चाहिए. So let's see. लिख देते हैं ये. The material of the wire and the length of the wire should be kept constant. And the length of the wire should be kept constant. Last क्या चीज लिखी हुई है भाई? Let's see. I think two key points are left. Okay, draw a table with column headings to display the readings. Always remember, whenever you will draw a table, you will include all the measured and calculated values. बेटा जब भी आप टेबल ड्रॉ करोगे तो आप सारी की सारी मेजर्ड और कैलकुलेटेड वैल्यूज लिखोगे. व्हाट आर द मेजर्ड वैल्यूज? डायमीटर स्लैश meters. Always write the full word and the unit as well. Then voltage slash V, that is the units. उसके बाद आपने लिख दिया current slash ampere. Then you will write the last column heading resistance slash ohms. Okay. Lastly क्या है? Conclusion देना है. How do we give a conclusion? Draw a graph a graph of resistance against diameter against diameter d and compare the results to see if diameter affects resistance. Simple as that. This marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask right away.